this matter, I had made my submissions mostly. There were certain things that I had to finish. And Lordships had indicated that your Lordships wish to look at the matter and then hear it again. इसके अंदर पिछली तारीख से लेके आज तारीख तक एक चीज डेवलपमेंट है, which is my duty to point out. Your Honor will recall, मेरी अरेस्ट हुई थी. जब मुझे पेश किया गया स्पेशल जज साहब के सामने तो मुझे जेसी की रिक्वेस्ट की, कोई ईडी कस्टडी ना मांगी. बिकॉज वन ऑफ माय पॉइंट सर वाज कि आपने प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज किया, आपने ईडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और उसके बावजूद कभी भी मुझसे ना इन्फॉर्मेशन मांगी गई ना मेरा स्टेटमेंट मांगा गया. जब मेरी अरेस्ट भी करी गई उसके बाद भी कोई स्टेटमेंट नहीं लिया और आपने मुझे जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया. तो पहले दिन आपने जुडिशियल कस्टडी की मांग करी, वो आपको मिली. तब से लेके जब तक मेरी बेल एप्लीकेशन इस कोर्ट के सामने उसकी बहस नहीं हुई, तब तक आपको ये याद नहीं आया कि आपने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए था. जब हमने ये बात यहां पर कोर्ट में कही, and your lordships asked the question of have you recorded the statement, my learned friend very fairly said yes, we have not recorded a statement. Then an application comes to be moved, say that we want custody. The learned special court gave them permission that whatever you wish to ask, go to the judicial and ask your questions, record whatever statement. So now a statement has also been recorded. It has been done now 4 days ago, 27th and 28th of October. 28th of October, I had addressed this court on 23rd. Application was filed on 26th. While declining ED remand, permission was granted to them to record my statement in judicial custody, and that was done on 27th and 28th. But what is most peculiar now is, and sir, this is what I will do is I will summarize my 10 points, which I am troubling this court with. What your honor will recall, this is about import of poppy seeds, where import has been done under a license from a correct country for the correct quality and the correct quantity by the correct person, following customs laws and following the regulations of the narcotic commissioner. So there is no problem on the actual import or the actual commodity which has been taken. The case here was, if the lordship remembers, the allegation is one of benami. कि आप कर रहे हो यूनिक के नाम से, और कर रहे हो ठीक है, आपने 8 और लोगों को साथ में मिलाया, उनके नाम से 8 अलग कस्टम्स आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड उन्होंने लिए और आपने उनकी मदद करी, जो ये दिखाता है कि एक्चुअली आप. सो द 10 पॉइंट्स, द फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैड मेड वाज, ये सारी चीज ईडी को फेमा की इन्वेस्टिगेशन, फॉरेन एक्सचेंज की इन्वेस्टिगेशन के अंदर इनकी धारणा बनी. तो पहला पॉइंट था कि ईडी इज नॉट द एजेंसी decide on Benami. It is a full act pertaining to Benami. That act has a separate department under the Income Tax Act to decide कौन सी चीज बेनामी है और कौन सी नहीं है. ईडी वो एजेंसी नहीं है. That is point number 1. Number 2, ईडी साहब को जब पता लगा या ऐसी धारणा उनकी हुई कि हाँ ये बेनामी हो सकता है, तो उन्होंने उस एजेंसी को चिट्ठी तक नहीं लिखी कि जी आप इसके अंदर तहकीकात कर लें, आप तफ्तीश कर लें, डिसाइड कर लें कि ये बेनामी है या नहीं है. तीसरी बात कि हमने स्ट्रेट अवे पुलिस में इंफॉर्मेशन भेज दी कि आप इस चीज के ऊपर एफआईआर दर्ज करें. वो पावर ईडी के पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर नहीं है. आई हैड शोन सेक्शन 66 ऑफ पीएमएलए, सेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके अंदर पावर है, बट वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे उस दिन. एंड सो लैक ऑफ पावर वाज द थर्ड. द फोर्थ पॉइंट सर, मैं सब कुछ मान लिया, 9 लोग बेनामी हैं और 9 लोग ने सारी कस्टम्स ड्यूटी देने के बाद, सारी परमिशन के देने के बाद प्रॉपर तरीके से एक कमोडिटी को इंपोर्ट किया. तो इसमें 417, 420 चीटिंग कहां से आई, किसको लॉस हुआ? आपका एफआईआर कहता है गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस है. तो उतनी है तो होती, चाहे मैं इंपोर्ट करूं चाहे कोई और इंपोर्ट करे. गवर्नमेंट अलाउ करती है एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी का आना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और इंपोर्ट करता तो ज्यादा ला सकता था. सो 420 और 417 के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे, कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं, कोई इंड्यूसमेंट नहीं. एंड दैट इज व्हाई फॉर आफ्टर डिस्पाइट मोर देन अ ईयर, जो एजेंसी, जो पुलिस ऑफिसर उस एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, आज तक उन्होंने कभी
मुझे ना बुलाया, चार्जशीट फाइल नहीं करी, कुछ नहीं, उस चीज को 1.5 साल हो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जब 420 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को देख, दैट मीन्स आपने इस गलत काम करने से जो आपको इकोनॉमिक एडवांटेज, जो आपको फाइनेंशियल लाभ मिला, उसको पकड़ना ईडी का काम। जब 420 खुद ही फाउंडेशन उसका हिल रहा है भी या नहीं, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का होने का तो सवाल ही नहीं। एंड दैट इज व्हाई all of these points, sir, which I am making, go to the first larger point, which is section 45 PMLA, जो requirement है, that it shows that I am not guilty of this offense. The higher threshold has been met and I should be granted bail. This is the first large submission. इसके अंदर ये 6 sub points थे. The second large submission which I made, sir, was कि आपने अरेस्ट करते हुए आपका एक थ्रेशोल्ड है सेक्शन 19 में. Section 45 is the first bucket. Section 19 is the second bucket. कि अरेस्ट करते समय ईडी साहब के पास अपने मटेरियल पे एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए. क्या होना चाहिए? I am guilty of that offense. It is not an arrest under CRPC which can be made on suspicion, not on credible information, not on my फाइंडिंग आउट फॉर एन इन्वेस्टिगेटिव पर्पस कि आपने ये किया या नहीं किया. टी की पावर टू अरेस्ट अंडर 19 इज आफ्टर ईडी कम्स टू अ कंक्लूजन, हाँ ये ऑफेंस हुआ, हाँ इस आदमी ने किया, हाँ मेरे पास वो सारा मटेरियल है ये दिखाने के लिए कि गिल्टी है. और अगर गिल्टी है, the question that I had posed for myself and I will invite this court to answer it in the context of this order and judgment is, can anybody come to the conclusion of somebody else's guilt without even speaking to them? कि मैंने अपने घर में फाइल के अंदर आपकी गिल्ट के बारे में सामान इकट्ठा किया, आपसे सवाल नहीं किया, आपसे जवाब नहीं पूछा, आपसे इंफॉर्मेशन नहीं मांगी, आपसे डॉक्यूमेंट नहीं लिया और आपको गिल्टी तरकार कर दिया. दैट इज द फैलेसी अंडर सेक्शन 19. और अगर सेक्शन 19 का उल्लंघन है तो रिलीज द सेक्विटर. आई हैड शोन जजमेंट्स ऑन दैट. सो दिस इज द सेकंड बकेट. एंड द थर्ड बकेट, व्हिच इज द लास्ट बकेट व्हिच आई हैड नोटेड, इज ऑन द इशू ऑफ नेसेसिटी टू अरेस्ट. क्या जरूरत थी? अब आप इस इन्वेस्टिगेशन को 11 महीने से आप कर रहे हैं, 1.5 साल से प्रेडिकेट एजेंसी कर रही है. किसी एजेंसी को इसकी जरूरत नहीं पड़ी कि वो मुझसे आके सवाल जवाब करे. आपने फेमा के अंदर मेरे अगेंस्ट एलओसी खोली ताकि मैं इंडिया पर छोड़ के ना जाऊं. मैंने उस एलओसी को चैलेंज किया. उस एलओसी के चैलेंज के अंदर आपने अपनी एलओसी को वापस लिया. 11 महीने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुझसे बिना पूछे, मुझसे बिना सोचे, मुझसे मेरे बारे में बिना जानकारी लिए आपने मुझे अरेस्ट कर दिया. नेसेसिटी क्या थी? और अगर नेसेसिटी नहीं थी तो फ्रॉम द लॉ ऑफ जोगिंदर कुमार ऑनवर्ड्स, व्हिच अप्लाइज टू नॉर्मल सीआरपीसी केसेस, the arrest had to be wrong. And that this is where I had shown, sir, Arvind Kejriwal's judgment. सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस दिया गया 3 जजेस को अभी. And while that reference is pending, interim bail has been granted till the time that reference is decided. So my third submission in the alternative is 45 का थ्रेशोल्ड सर मैं क्रॉस करता हूं, इसलिए मुझे बेल मिलनी चाहिए. नंबर 2, सेक्शन 19 में इनकी अरेस्ट करने के अंदर इन्होंने मैंडेटरी प्रोविजंस का उल्लंघन किया है, इसलिए मुझे बेल मिलनी चाहिए. और नंबर 3, मेरी अरेस्ट की एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई नेसेसिटी नहीं थी, विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. एंड सो योर ऑनर शुड necessity is over and above 90. Necessity, Arvind Kejriwal judgment, let me show that straight away again, says कि नेसेसिटी के बारे में किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन में नहीं है. लेकिन क्या हमें नेसेसिटी एडिशनली देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल की जजमेंट है, वो कंपाइलेशन आपके पास थी. इस कंपाइलेशन में पेज 163 पर दैट जजमेंट बिगिंस, सर. And straight away, let me take your honor to the relevant issue. Judgment के end में, after all of that I read, I am going straight away to the issue of necessity. Please come, sir. Page 204, paragraph 84.
तो सेक्शन 45 का ग्राउंड अलग, सेक्शन 19 का ग्राउंड अलग. तीसरा independent ground, necessity of arrest, and that is what the Supreme Court deals with at para 84 and 85. In view of the aforesaid discussion, and as Vijay Madan Lal Chaudhary Supra is a decision rendered by 3-judge bench, we deem it appropriate to refer the following questions of law for consideration by a larger bench. A. Whether the need and necessity to arrest is a separate ground to challenge the order of arrest passed in terms of section 19(1) of the Act. Whether the need and necessity to arrest refers to the satisfaction of formal parameters to arrest and take a person into custody, or it relates to other personal grounds and reasons regarding necessity to arrest a person in the facts. तो क्या आपका सिर्फ एक lip service formally मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे जरूरत थी, क्या वो sufficient है, या in the context of that person whether really there is a necessity is to be seen. That is point number B. And point number C, if questions A and B are answered in the affirmative, what are the parameters and facts that are to be taken into consideration by the court while examining the question of need and necessity of arrest? As we are referring the matter to a larger bench, we have to, please see the words, we have to, despite our findings on reason to believe, consider whether interim bail should be granted to Arvind Kejriwal. Given the fact that the right to life and liberty is sacrosanct, and Arvind Kejriwal has suffered incarceration of over 90 days, the questions referred to above require in-depth consideration by a larger bench. We direct that he should be released on interim bail in connection. Please. My submission, sir, is this. This is a case where it was 90 days custody. That custody is not significant from the point of view of PMLA. बाकी cases हुए सर जिसके अंदर 6 महीने हुए, 2 साल हुए, 1.5 साल हुआ. Those are cases where period of custody has weighed with the court purely to grant bail. And I had started by saying I am not one of those cases, which is why I am saying please test me on the level of 45. Please test them on their allegations of section 19. Additionally, there is an issue of necessity. And that is why these are the 3 things that I am beseeching this court to consider. कि जब पूरे केस के अंदर आपके पास allegation wise material is questionable or does not exist, and where you exercise that power prematurely, take a man into custody before that material came in, violated section 19. According to me, this is a case where I should be released on bail. I am putting this third point as an additional factor, not as the primary point. So I am not seeking interim bail. I am seeking bail. Because according to me, I have reached the threshold of 45. पर इससे मैं ज्यादा क्या बोलूं कि अगर आप इनके काउंटर एफिडेविट को एक बार देखें, and it is so peculiar that a responsible agency, पर मैं पढ़ूंगा इसको, लेकिन एजेंसी कहती है आप फ्लाइट रिस्क हैं. क्यों? क्योंकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं. आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आप फ्लाइट रिस्क है. सर कार्गो अंदर आता है, इंपोर्ट होता है, मैं अपने काम के लिए बाहर जाता हूं. There can be always conditions imposed in these scenarios to titrate. Every day we deal with situations where people have to travel for purpose of work or otherwise. Please see page number 26. इनकी 2 objections हैं. Para H. The accused arrestee fails the triple test of bail for the following reasons: tampering with evidence and influencing witnesses. It is submitted that the arrestee accused person is the kingpin and mastermind of the whole scheme narrated above, where large number of Benami entities were formed with dummy proprietors who were his associates and employees. If he is let out on bail, there is high likelihood that accused arrestee will influence the witnesses in this case. Flight risk. It is submitted that the accused is a person of means and works in the business of import and export. Such circumstances are a flight risk if let out on bail. My submission was this: both of these issues are irrelevant as far as the others are concerned. Their statements have already been recorded. And what your honor will recall is all of those persons are co-accused. So there is no independent witnesses that they have which are capable of being influenced. And second is the work that somebody does. Only because a person is in import-export business does not make him a flight risk. Because my submission is that on these aspects, I should be released on bail. Whatever conditions your lordship feels that I should comply with, I am ready and willing to do so. If your lordship has any questions, whether on facts or on law, I am here to assist the court in finding the truth, both legally and factually.
पत्र दिनांक 26/5/23 जिसके साथ प्रवर्तन निर्देशालय भारत सरकार नई दिल्ली का पुलिस महानिदेशक भोपाल को संबोधित पत्र क्रमांक दिनांक 16/5/23 एवं सपत्र संलग्न प्राप्त हुए वैयाधिक कुलदीप भानु पुत्र प्रेम सिंह भामू सहायक प्रवर्तन अधिकारी प्रवर्तन निर्देशालय STF शाखा भारत सरकार नई दिल्ली ने उपस्थित होकर श्री आसिफ हनीफ कादिर एवं आसिफ हनीफ थारा की बेनामी फर्म के प्रोप्राइटर पट्टा स्वामी S मूर्ति, नूर अहमद, शंकर राव, लोकेश इरफान पाशा, अलीम उल्लाह शरीफ, किरण कुमार, हमजद पाशा एवं अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीयन करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन की नकल इस प्रकार है कि थाना प्रभारी थाना मुरार जिला ग्वालियर विशेष श्री आसिफ हनीफ थारा, हनीफ कादिर थारा एवं आसिफ हनीफ थारा की बेनामी फर्म के प्रोप्राइटर एवं अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120B 417 एवं 420 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत अपराध पंजीबद्ध करने बाबत उपरोक्त विषय में लेख है कि STF प्रवर्तन निर्देशालय भारत सरकार के द्वारा फीमा जांच के दौरान यह पता चला कि बेंगलुरु निवासी आसिफ हनीफ थारा केयर ऑफ मैसर्स यूनिक ट्रेडर्स चीन और तुर्की से पॉपी सीड्स कम मूल्य पर आयात कर रहा था। वह अपने कर्मचारियों के नाम से स्थापित विभिन्न स्वामित्व फर्मा के नाम से राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित पॉपी सीड्स आयात के लिए लाइसेंस प्रावधान का घोर उल्लंघन करते हुए केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो CBN इंदौर ग्वालियर से आयात प्राधिकरण प्राप्त कर रहा था। सबको काफी वायलेशन है, ऐसा आपका कहना कोई वायलेशन नहीं है सर? इट इज इन कंटेंशन इन द FIR। लाइसेंस का वायलेशन है साहब। It is not found that there is because of there is no such department has taken any action on saying a letter that there is a violation of the license. But the mistake in the license is that all the companies are running in the same address. I'm just going to read the contention in which it is found. लाइसेंस का वायलेशन आप बताइए, कोई वायलेशन लाइसेंस नहीं सर इसमें नहीं आया। नहीं, हम नहीं जानते आया कि नहीं आया। एज पर योर इन्वेस्टिगेशन Yes, my lord. As per the public notice, only one importer can obtain one license. So, by doing this, he has contravened the provisions of the public notice, the guidelines of the district. So, in that way, it is a violation of the license. only one person can do the business as per condition of license. One person can obtain one license. Violation. As per allegation, He has wants around 19 additional import license he obtained by circumventing the guidelines of the Ministry of Finance. That is the contravention. तथा उक्त फर्म यूनिक ट्रेडर्स का प्रोप्राइटर आसिफ हनीफ थारा का पिता सोहेंसो और उक्त फर्म की ओर से हस्ताक्षर कारोबार के अनुक्रम में कार्य करने हेतु अधिकृत व्यक्ति है जो फर्म से समस्त कारोबार एवं आर्थिक व्यापारिक कार्यों का संचालन करता है। जांच के दौरान यह पता चला है कि सोहेंसो द्वारा अपने कर्मचारियों के नाम से निम्नलिखित प्रोप्राइटरशिप फर्म स्थापित की गई है जो कि एक ही पते पर संचालित है। 9 firm. So on the basis of that FIR, we are registered the ECIR, and as per the section 19 and 19, after examining the material, we are arrested the accused person. Section 19, I am going to read that we have the power of the arrest. If the director, deputy director, if the director, deputy director, assistant director, or any other officer authorized in this behalf by the central government by general or special order has on the basis of the material in his possession reason to believe that any person has been guilty of an offence punishable under this act may arrest such person and shall as soon as may be inform him of the grounds for such arrest. The director, deputy director, assistant director, or any other officer shall immediately after arrest of such person under subsection so and so forwarded a copy of the order along with the material in his possession refer to that subsection to the adjudicating authority in a sealed envelope in the matter as may be prescribed, and such adjudicating authority shall keep such order and material for such period as may be prescribed. Every person arrested under subsection 1 shall within a 24 hours be taken to the judicial magistrate or a metropolitan magistrate as the case may be having jurisdiction, provided that the period of 24 hours shall exclude the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate court. ये आपने रिकॉर्ड किया रीजंस? Yes sir, everything is on record sir, along with the ECIR we are submitting. Page 60, annexure P3, page 60 of my petition. Of the compilation of petition. Petition.
The reason of arrest and grounds of arrest बता रहे. Pendency of bail application. Sir, during the pendency of that bail application, तो बढ़िया 28th of अच्छा बड़ा रेफर करना. sir. 60. Four, page 75 पे reason to believe के heading subject to what my 25. so 73 पे एक रोल ऑफ आसिफ हनीफ थारा शुरू होता है जहाँ पे एलिगेशन अगेंस्ट ऑफ दैट Reply. दैट सेम Yes, sir. That- Role of Asif Tara. शराब बेनामी वाला जो 2.1 2.2 2.3 2.3 के लास्ट सेंटेंस में entities were controlled by Asif has been disclosed by the employees in their statements. ये जो co-accused के statement थे 2.3 clearly mentioned that the analysis of the bank statement measures unique traders and 9 Benami firms in the name of Mrs. Sh.Live Thara. Employee also reveals that fact that the payments for import of poppy seeds were made to their overseas suppliers immediately after receiving the credits from the Messrs. Unique Traders as entity registered in the name of Mr. Hanif K. Thara, which is directly controlled by Asif Hanif Thara. This proves the fact that these entities are only namesake entities set up by Mr. Asif Hanif Thara in the name of his employees so as to obtain maximum share of the country kept for import of the poppy seeds. The fact of that these